Good morning students, welcome to Gyanpeeth Odisha. Today we will start with the first unit's important portion. आमे एबे जे देखिथिलु कोन ना रिमेनिंग यूनिट्स से जहा किछि भी अछि जहा किछि भी important from the exam perspective and first unit रे आमे एबे जे देखिथिलु RTP MTP questions and scanner questions relevant for December 24 examination. Fine and onwards भी but particularly ए attempt पे जहा भी relevant अछि से सब जिंस जगह में डिस्कस करछु. तो first heading दियो trust deed जोड़ा कि पचार थिला December 2022 रे it's a recent question trust deed. जहाँ किसी भी डाउट अच्छी you can mention in the comment section and telegram channel रे भी address करि परचो. Most of the students are asking in the telegram section as well. आमे सेथरे मध्य address करचो सब जिंस even in the comment section तमे पचरि परिबो directly पचरि परिबो. Clear? As exams are very near तो wish you all the best for the exams and जो भी topic रे किसी भी doubt अच्छी you can just directly contact us. तो please heading your trust deed. Trust deed. Trust deed as per the Companies Act. Textbook रे trust deed concept जोड़ा अच्छी हमरो से बहुत कम देइची किंबा देइनी कहले चले हैला बट से डायरेक्टली गोटे क्वेश्चन पचारछि. Voice is clear? Please confirm voice is clear. काहेंगे कहले mo once एथरे पढ़ासले ध्यान दे पारिबेनी. Fine, thank you. So please write down trust deed. Trust deed रो meaning होची कोन? तुमको एते कलर पेन से कोन पे लिखोची फॉलो दिस बिकॉज़ इमदी जदी लेखियो कहले तुमको बहुत जल्दी मन रहियो जिंसडा. Okay, trust deed under lekho it's a legal document. It's a legal document. Trust deed is a legal document. Trust deed is a legal document that outlines number one hochi terms plus conditions of a company's debenture issue of a company's debenture issue So trust deed is nothing but a legal document. सेटा कोन गोटे डॉक्यूमेंट जोड़ा रे कि लीगल एस्पेक्ट थाउची लीगली किछि सपोर्ट थाउची को जिंस को से कवर अप करबो ना टर्म्स कंडीशंस को विषय टर्म्स एंड कंडीशंस ना कंपनी रो डिबेंचर इश्यू डिबेंचर्स जहां भी गोटे कंपनी इश्यू करची व्हाटएवर टर्म्स एंड कंडीशंस दैट कंपनी इज इंप्लाइंग डिबेंचर होल्डर्स ऊपर जहां भी कंडीशन से इंप्लाई करची सब जिंस जगह में जानि परिया थ्रू द लीगल डॉक्यूमेंट नोन एज ट्रस्ट डीड. फाइन एडा रहला नंबर 1 पॉइंट. The question was asked for 5 marks, so at least 5 points to say demand करिवो आगा हैला. Second point लिखो it acts as a contract. It acts as a contract between the company and debenture trustee. Company and debenture trustee. Debenture trustee. It acts as a contract between the debenture trustee. It acts as a contract between the company and the debenture trustee. मो कोन कहली जाबे टर्म्स एंड कंडीशंस अछि से कहि परियनी तू मते आगडो कोन पे कहनु कि ये कहि परियनी कि कोन तते मु कहिछि कि कहनी कि कोन से जिंसर जहा भी डिस्टर्बेंस आसी परियनी बिकॉज़ गुटे डीड तांके साइन करचंदी डीड देखुचंदी तो से कहे कोन जहा भी सिग्नेचर करबो ही विल साइन ओनली आफ्टर रीडिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी क्लियरली. बुझिला? तो नंबर 3 पॉइंट होची ट्रस्ट डीड includes
clauses from clauses from clauses from Companies Act and SEBI, from Companies Act from Companies Act and SEBI, from Companies Act and SEBI. ठीक अच्छे एते जे बुझा पड़ला तीनटा पॉइंट ट्राई करो कि जतलो को मु बुझौची सेतलो आगा मन रखि देबा पई बिकॉज़ वी आर ब्रेकिंग डाउन द कंप्लीट पॉइंट्स बुझला तो फर्स्ट थिंग से कहला इट्स लीगल डॉक्यूमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस रहिबो कार विषय डिबेंचर इश्यू विषय एंड जेहेतु तार टर्म्स एंड कंडीशंस रोची इट्स एक्टिंग एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड डिबेंचर इश्यू डिबेंचर होल्डर्स एंड थर्ड थिंग इज ता पाखरे कोन कोन जिंस रहिबो फर्स्ट थिंग होची कंपनीज एक्ट रो प्रोविजंस रहिबो अलोंग विथ दैट सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस गुडा रहिबो बुझला the next point is the deed also the deed also defines केते जिंस देखा फोर पार्ट्स करो एडा को फर्स्ट थिंग होची टर्म्स second thing होची interest rates terms second thing होची interest rates third thing होची redemption periods and fourth thing होची special conditions ए चारटा जागो वर्ड्स तुमको कंपलसरी लिखियार अछि मु जहां भी हिंदी क्लासिफाई करिक लेखौची मन रखियो कि से जा होची हमर कोन कीवर्ड्स तो से चारटा जागो जिंस हमको कहिला फर्स्ट थिंग होची टर्म्स सेकंड थिंग होची इंटरेस्ट रेट्स थर्ड थिंग होची रिडेम्पशन पीरियड फोर्थ थिंग होची स्पेशल कंडीशंस क्लियर लास्ट पॉइंट अछि एडर लास्ट पॉइंट होची ट्रस्ट डीड includes an undertaking by the company. Trust deed includes an undertaking by the company to pay interest and repay the principal Okay. Fine. Trust deed विषय बुझिले ना किछि डाउट अछि कार संगे संगे टिके कंफर्म करिया वी हैव टू कवर अ लॉट बुझिला तम दि जणो फाइन ठीक अच्छी एटा रहिला गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ट्रस्ट डीड नेक्स्ट टॉपिक हमें जहां भी डिस्कस करबा सेडा होची हमर कोन बायबैक ऑफ शेयर्स हेडिंग दियो बायबैक ऑफ शेयर्स buyback of shares होची वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इट इज आस्क्ड इन द एमटीपी 2015 जून तमे अच्छा फर्स्ट लिखि दियो तापर सेडा हेडिंग दबो कि कोडा रे कोन हेची कि कोन
heading दियो buyback of shares, buyback of shares. So the question was asked in MTP June 2015, RTP December 2020, RTP December 2020 and exam question माने scanner रे June 2015 माने देखो there is a chance that MTP रे जहाँ भी जो attempt रे देइछि again सेडा पचारि पारियो immediately. Again repeat करछि से sources रो question गुड थरे पचारथिला हमरो 2016 June 2016 June मु लेखोची जिनस कौन पे कहले गोटे जिनस अच्छी मु भी जेहेतु लाइक एबे आगे सेड रो आसीची वेरी रिसेंटली मु सेड रो आसीची स्टूडेंट माइंडसेट केमती रहइबो जेतोळ आमे गोटे क्वेश्चन लेखुछु कि गोटे टॉपिक लेखुछु व्हेनेवर वी आर राइटिंग एसाइड ता पाखरे जदी आमे को अटेम्प्ट रे आसीची केथर आसीची केते मार्क्स पे आसीची लेखिले से जिनसला बहुत जल्दी हम माइंड टा रजिस्टर करियो तमे जदी खाली इंपोर्टेंट लेखि कि छाड़ दबो ना सेतोळ मध्ये सेते इफेक्टिव रहयनी जेते एजा सब लेखिबो सेते अधिक से जिनसडा मन रहिबो बुझला इट्स अ ट्रिक जेतो एडा के कहिनी निजे निजे फील करछि एक्सपीरियंस करछि तो मु कहि दउछि हैला अगेन केबे पछाछि सिए अगेन पछाछि से 2017 डिसेंबर रे 2017 डिसेंबर अच्छा बोनस इश्यू रो डिस्कशन हमर हे जेथिले ना टिके कंफर्म कलो बोनस इश्यू रा बुझे देछि ना मु अच्छा हाँ या आरटीपी डिसेंबर 2021 बस नोट डाउन करो एति की या प्लीज राइट डाउन जेते देखो हमर चारटा पांचटा जिंस कंपेयर होची तो आई एम टेकिंग अ पॉज एंड राइटिंग हला नो मैटर लेट हबो मु जानि परछि बट स्टिल जो जिंसडा हमें कवर करछु सेडा प्रिसाइज रहयार अछि हला तो कोऑपरेट करियो बायबैक ऑफ शेयर्स अंडर लेखा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट according to section 63 according to section 63 of the Companies Act 2013 सॉरी 68 हैला मु सडा देखुथिले तो 68 टा से केन दे देची 63 भूल देची स्कैनर रे गुटे जागा रे से भूल देची करेक्शन करबो इट्स 68 हैला बड़ा बिजर से स्कैनर रे भूल दबो टेक्स्ट बुक रे भूल दबो बट त माने भूल लिखले मानोनी ग्रेट according to section 68 of the Companies Act 2013 a company can intend to buy back its own securities shares or other specified
or other specified securities or other specified securities full stop दिया से सब जा पॉइंट्स मिसी देची बट एथरे अलग अलग क्वेश्चन केमती तमे फ्रेम करिवो सेडा लेखोची एडा रहला हमर सेक्शन 68 रो मीनिंग टा तापरे लेखो पर्पस ऑफ बायबैक तो ये करूची कोन पेडा सेडा से पचारची हैला तो पर्पस होची हमर पर्पस होची पर्पस फर्स्ट पॉइंट लेखो इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ शेयर्स increasing the value of shares increasing the value of shares increasing the earning per share increasing the earning per share increasing the earning per share restructuring the debt equity mix restructuring debt equity mix companies consolidation and last point ho jedaro show the companies market position show the companies market position as financially strong हैला पर्पस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स मु कहि दउची से डायरेक्टली क्वेश्चन पचारिया परे 4 मार्क्स बिट क्वेश्चन रे एमसीक्यू रे पचारि पारियो नले 2 रीजंस हिसाब रे से पचारि पारिबो क्लियर तो बायबैक ऑफ शेयर्स रो मीनिंग होची व्हेनेवर अ कंपनी इज बाइंग बैक इट्स शेयर्स जहां भी शेयर सिक्योरिटी से पब्लिक को इश्यू कर दीची सेडा अगेन जेतलो पब्लिक रो बाय कर दोची दैट इज नोन एज अ बायबैक ऑफ शेयर्स तो तार पर्पस कोन पे से बायबैक करची पांचटा रीजन से कहिला पांचटा प्राइमरी रीजन फर्स्ट थिंग होची इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ शेयर्स सी जदी तार शेयर्स किनि दोची तो किनि कि से कोन करियो इंप्रूवाइज करि पारियो बुझिला ना से ता पाखरे अधिक शेयर्स रहियो तो ता पाखरे वैल्यू भी अधिक रहइबो इंक्रीजिंग द ईपीएस रो मीनिंग होची पाखरे लिखि दियो अर्निंग पर शेयर व्हाट डू यू मीन बाय अर्निंग पर शेयर माने गुटे कंपनी गुटे शेयर ऊपर केते डिविडेंड अर्न करि पारियो गुटे शेयर होल्डर हिसाब रे हाउ मच डिविडेंड कैन यू अर्न पर शेयर गुटे शेयर किनेगी हाउ मच डिविडेंड कैन यू अर्न इट इज ईपीएस restructuring the debt equity mix माने कोन शेयर्स जतलो तमे किनि दोचो यार कोन बाय करछो इक्विटी बाय करछो इक्विटी शेयर होल्डर्स माने कोन जे शेयर्स किनुची इक्विटी किनुची तो इक्विटी जतलो हम पाखरे अधिक हेयला तमे कोन करिया डेट और इक्विटी कोन भलो रेशियो रे डिसाइड करि परिबा हमर लॉन्ग टर्म डेट करेंट डेट जहां भी अछि सेडा इज टू हमर इक्विटी से दिरा जिंस हमें भल से हेल्दी बैलेंस टा करि परिबा restructuring the debt equity mix companies consolidation जदि गुटे कंपनी आउडे कंपनी को कंसोलिडेट करबा चाहछि मिक्सिबा को चाहछि तो से केंदी करि परियो ता पखरे जा भी शेयर्स अछि से शेयर्स तांको को देगी किबा तांको शेयर्स नै गिरी करि परिबो तो से पर्पस पे ताको शेयर्स दरकार तो दिस इज कंपनीज कंसोलिडेशन शो द कंपनीज मार्केट पोजीशन एज फाइनेंशियली स्ट्रांग ये जतलो को सब जिंस किनि दोछि ता पखरे शेयर्स रहियो तो शेयर्स रहियो li कहले कोन रहियो वैल्यू रहिबो वैल्यू जतलो अधिक रहउछि तो से कोन फाइनेंशियली स्ट्रांग लागिबो ना नै बुझि पालो बुझिला रुद्र बुझिला वर्षा क्लियर समस्त को कंफर्म करो okay third point fine so third point is restructuring the debt equity mix restructuring the debt equity mix तो चिंकी the thing is जेतलो आमे इक्विटी किनुछु
जिते गोटे शेयर होल्डर्स किसी शेयर्स किणुचंदी तो दे आर बाइंग द इक्विटी, दे बाइंग द इक्विटी। तो गोटे कंपनी पाखरे जदि 100टा शेयर्स अछि हैला, से जदि 30 से रखिला और 70 कौन करला बिकी देला, तो से पर्पस रे कौन हबो ता पाखरे शेयर्स कम हे जिवो, ता पाखरे 1 लाख रुपीस रो डेट अछि आ एडा कोन 30,000, तो ता पाखरे इक्विटी कम अछि डेट अधिक हे होछि, तो से पर्पस रे कौन हबो ताको टिके प्रॉब्लम हे पारिबो। तो सी कौन करला बाय बैक कर देला, से एडा कर देला 60 लोकान पाखरे रखे 30, तो ता लगी कौन हबो एडा 70,000 हबो, एडा 1 लाख हबो। तो टिके नॉर्मल हैला ना नै डेट इक्विटी मिक्सटा, तो सेडा कौन करे जदि शेयर वैल्यू आउरी बढ़ुछि, शेयर वैल्यू बढ़ी के कौन हैला गोटे गोटे 20 टका हैला, तो एडा कौन हबो 1 लाख कि केते रहिला 70 ना, तो 1,40,000 हैला, एडा 1 लाख रहिला। तो कौन हम हमर डेट इक्विटी मिक्सटा इक्विटी अधिक रहउछि, तो इक्विटी अधिक रहले आमे कोन टिके भलो एली कहि कि पोर्ट्रे करि परिबा। दैट्स व्हाई से कोन करियो से जिंस पई ताको कोन शेयर्स किनि के आनिबार अछि, आनिला पर ना से जहाले रिस्ट्रक्चर करि परिबो। रिस्ट्रक्चर माने रीबिल्डिंग, जदि गोटे जिंसडा हम बनौचु क्ले रे बनौचु भल लागिलानी तो आमे कोन करिया सेटा को इंदी कर देबा अगेन स्टार्ट करिबा। इन द सेम वे डेट और इक्विटी टा बैलेंस करिबा पई आमे कोन करिया हमर शेयर्स गुडा को किनि के आनिबा, बुझिला। तो चिंकी बुझा पड़ला। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। हिंदी टिके पचर थिबो मते भी भल लागियो। तो नेक्स्ट पॉइंट लेख, दीडा लॉन्ग क्वेश्चन, दीडा क्वेश्चन एडा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, दीडा क्वेश्चन कवर अप हैला हमर। तळे लेख मोड ऑफ बायबैक, मोड्स ऑफ बायबैक, मोड्स ऑफ बायबैक, मोड्स ऑफ बायबैक। company can company can company can undertake company can undertake any of the following methods, any of the following methods, any of the following methods for buying back its shares, for buying back its shares, for buying back its shares। तो 3 पार्ट्स करो एडा को। नंबर 1 होची from existing shareholders, from existing shareholders or security holders, from existing shareholders or security holders on a proportionate basis, on a proportionate basis through tender offer, through tender offer, through tender offer। from the open market, from the open market through book building process or stock exchange, book building process or stock exchange, book building process or stock exchange। book building process or stock exchange। थर्ड पॉइंट होची by purchasing
by purchasing securities issued to employees, securities issued to employees, securities issued to employees in pursuance of stock option, in pursuance of stock option, in pursuance of stock option. बुझिला एडी अछि तापर लिखो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स एतिकी बुझा पड़ला ना काउ डाउट अछि एटा बेसिक पॉइंट उडागो बुझिला तुमको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स एथरे फर्स्ट पॉइंट होची एओए मस्ट ऑथराइज मु शॉर्ट रे लिखौची एडा तम मन रय कहिगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रे मेंशन हेगी थिबार अछि थिले आगा हे परिबो obtain members approval, obtain members approval, obtain members approval by passing a special resolution, by passing a special resolution at general meeting, by passing a special resolution at general meeting. तापरे थर्ड पॉइंट होची buyback is less than is equal to 25%, less than is equal to 25% of aggregate paid up capital, of aggregate paid up capital plus free reserves of the company. इमती लिखले तुमको मन रहा है इंडिया का नोट डाउन करियो तापरे फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट होची all shares must be fully paid up, all shares must be fully paid up. Company shall pay the consideration only by way of cash, only by way of cash. फाइव पॉइंट्स होची हमर कोन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स तुमको 5 मार्क्स पे पचाची तो 5 पॉइंट्स लिखिबो हैला
किछि डाउट अछि कार ए जिनसडा मु गुथरे कहि दोचे देखो जहाँ भी मेथड से कहि तीनटा मेथड से कहला फर्स्ट थिंग होची जो एक्जिस्टिंग हमर शेयर होल्डर माने अछंदी से मानंगर हमें मागी किने कि नहीं पारिबा सेकंड थिंग होची बुक बिल्डिंग प्रोसेस माने गुटे कंपनी कोन करबो आमो किछि शेयर्स माने प्राइस टा डिसाइड करबो कि आमे 100 रु 200 एते दिन पे रखिबो 200 रु 500 एते दिन पे रखियो ए ग्रुप पे रखिबो तो आमे से टाइम रे से बुक बिल्डिंग प्रोसेस रे आमे किने परिबा किबा गुटे ग्रुप ऑफ पीपल थिबे जे कि बिकु थिबे से माने पाखरा आमे किने परिबा किबा स्टॉक एक्सचेंज माने आमे जिंदी गुटे नॉर्मल शेयर होल्डर किनोची स्टॉक एक्सचेंज को जाईगिरी हैला से मार्केट रे सिंदी आमे किने परिबा थर्ड थिंग इज होची स्टॉक ऑप्शन माने एम्प्लॉय मानको कोन थाउची जे गुटे 5 वर्ष रो कि 6 वर्ष रो अधिक काम करंती से माने कोन कंपनी तांको हिसाब रे गुटे शेयर्स दियंती कि जदि से 5 इयर्स काम करछ त हम 10 शेयर्स दे परिबो 6 इयर्स काम करछ गुटे 12 शेयर्स दे परिबो त हमें कोन करिया से एम्प्लॉय मानको सहित कथा हेगिरी हमें कोन तांका नंगरु शेयर्स नै परिबा बुझिला सो दीज आर द ऑप्शंस खाली तुमको मेथड्स जदि मोड्स पचारची आ सेटा कोन 3-4 मार्क्स में पचारची तो एतिकी लिखिबाडा एनफ नाइले कहले जदि से 6 मार्क्स में पचारची मु जहाँ भी तुमको बुझेली यू हैव टू राइट one लाइन दैट्स मोर देन एनफ हैला कीवर्ड सब मेंशन हे जेची तो दिस इज द प्रोसीजर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट से कहिछि देखो वेरी इंपोर्टेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स रे से 5 पॉइंट्स कहिछि फर्स्ट थिंग होची आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रे मेंशन हेगी थिबार अछि मैंडेटरीली थिबार अछि कि बायबैक करि परिबो कोइ जदि नाही तो हमें करि परिबा सेकंड पॉइंट होची स्पेशल रेजोल्यूशन पास करिवार अछि जनरल मीटिंग रे और समस्त मेंबर सेडा को अप्रूव करियार अछि समस्त मेंबर सेडा को अप्रूव करियार अछि बायबैक जहां भी होची सेडा कोन 25% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माने कंपनी भितर थिबा पेड अप शेयर कैपिटल आ कंपनी सेव करिगी रखिथिबा रिजर्व्स दीडा जगह मिसेले जेति की होची तार जति हम 25% बाहर करछु त हमर बायबैक ता ताडू कम रहिबा दरकार all shares must be fully paid up सबोडा शेयर्स कोन फुल्ली पेड अप हेगी थिबार अछि अनपेड शेयर्स किबा पार्टली पेड अप शेयर्स को केबेल हमें बायबैक करि परियन काहेंगी आमे कोन से शेयर होल्डर माने जदि हमको पूरा पैसा दउचंदी आमे तांको पूरा पैसा देई गिनलु तो सेडा गोटे जिंस हैला बट से माने आगा देई नांदी तो हमें से शेयर्स किनि परिबानी बुझिला तो ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स आका ही परिबो लास्ट पॉइंट होची कंपनी शैल पे द कंसिडरेशन ओनली बाय वे ऑफ कैश सी आउ किछि को माध्यम रे देई परिबोनी ओनली बाय वे ऑफ कैश बुझिला इज इट क्लियर प्लीज कंफर्म okay fine thank you next lekho 6 marks question from December 2017 डायरेक्टली एग्जाम क्वेश्चंस पढ़छु हमें तो केते भी बोरिंग हो बिकॉज जो जिनसटा एग्री करियर अछि केते भी बोरिंग जिंस हो वी हैव टू मैंडेटरीली डन सेटा होचे हमरो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बुझिला तो लेखो क्वेश्चन डा circumstances को वर्ड भी जदि बुझा पड़नी पचारि परिबो नॉट इवन सेंटेंसेस ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो circumstances in which a company cannot buy back its own shares buy back its own को केसेस रे कंपनी तारा निज शेयर्स किनि पारिबोनी को केसेस रे कंपनी तारा निज शेयर्स किनि पारिबोनी फर्स्ट पॉइंट लेखो आई मीन द सेक्शन 70 सेक्शन अच्छा मैजिक पेन है हला हेडा इतना मैजिक नहीं चाहिए जितना मैजिक करना है इंस्टीट्यूट हमारा कर ही लेता है हमसे ब्लू why is it not changing हाँ हला section 70 provides that no company एटा लॉ लैंग्वेज आगे लिखिबार अछि no company shall directly
no company shall directly or indirectly or indirectly purchase its own shares purchase its own shares or other specified securities or other specified securities purchase its own shares or other specified securities 3 points tindaga point వచ్చారు number 1 through any subsidiary company through any subsidiary company including its own subsidiary companies including its own subsidiary companies including its own subsidiary companies number 2 through any investment company or group of investment companies or group of investment companies through any investment companies last point hochi if a default is made by the company एडा होची important point हमरो if a default माने बुझछ तो किछि भूल हैला कंपनी तरफ रो if a default is made by the company if a default is made by the company को points रे से कहिछि देखा keywords एउडागो keywords we are writing in green first point होछि हमरो repayment of deposits exactly ए फॉर्मेट टा फॉलो करियो माने कलर विषय में कोनी ए फॉर्मेट टा फॉलो करियो तो बहुत भलो मार्क्स मिलेबो गुटे जिनस मन रखो एग्जामिनर को जेते इजी होबो पेपर करेक्शन करिया पई तुमको सेते भलो मार्क्स दबो हला बहुत कड़वा सचेडा ता पई हमें इजी करियर अछि रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स नंबर 1 नंबर 2 interest payment thereon interest payment thereon redemption of debentures or preference shares redemption of debentures or preference shares debentures or preference shares payment of dividend to any shareholder payment of dividend to any shareholder
repayment of any term loan, repayment of any term loan, repayment of any term loan or interest payable, माने टर्म लोन रो इंटरेस्ट भी जदी से रीपेमेंट करनी प्रिंसिपल दे दीची इंटरेस्ट टिके डिफॉल्ट हो जाईची कहले हबनी हैला दीडा जाको पेमेंट करियर अछि हैला रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन और इंटरेस्ट, repayment of any term loan or interest to any bank or financial institution, to any bank or financial institution, to any bank or financial institution बुझी पालो एतिकी तो केतेरा की पॉइंट्स हैला हमरो 5 पॉइंट्स इंस्टीट्यूट जदि तमना सहित टिके कंफ्यूज करिकी खेलिबा को चाहूची छोटे छोटे बच्चे थोड़े खेलेंगे जदि ता मुंडरे ए जिंसडा पसिला तो खाली से एक गुटे क्वेश्चन भी डायरेक्टली दे दे पारिबो बिकॉज सेडा भी जदि से 3 मार्क्स पे दे दोची सडनली पिलानो को मन पडियोनी अनलेस एंड अंटिल दे आर राइटिंग इट इन दिस फॉर्मेट सो जिनस कौन अली कहले कंपनी केबेले तार शेयर्स जहाँ भी किनी पारिबो बायबैक ऑफ शेयर्स से करि पारिबो बट केबे से जिनसडा प्रोहिबिटेड हेगी अछि दिस इज प्रोहिबिटेड एडा कोन हमरो प्रोहिबिटेड केबे प्रोहिबिटेड हेगी थाउची ना फर्स्ट थिंग होची से सब्सिडरी कंपनी माने ता निज सब्सिडरी कंपनी कि को एले सब्सिडरी कंपनीज रु किनी पारिबोनी डायरेक्टली गोटे कंपनीज रु किनी पारिबो फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड रो जदी से शेयर्स माने ता शेयर से बिकिछि ए लिमिटेड को एक्स लिमिटेड जे भी अच्छी से ए लिमिटेड को बिकिछि तो डायरेक्टली ए लिमिटेड रो से किनी पारिबो बट ए लिमिटेड रो बी सी डी होची सब्सिडरीज सेमानंग थ्रू रे किनी पारिबोनी सेमानंग थ्रू रे ये किनी पारिबोनी शेयर्स जदी एडा गुटे केस हैला जदी एक्स लिमिटेड तार सब्सिडरी वाई लिमिटेड को किछि शेयर्स बिकिछि ऑलरेडी ताडू भी से किनी पारिबोनी सब्सिडरी कंपनीज ता निजर हो बाकी जहार भी हो से बायबैक करि पारिबोनी फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट होची इन्वेस्टमेंट कंपनीज माने गोटे कंपनी थिबो जार काम आगा खाली इन्वेस्टमेंट करिवर ता काम कोन इन्वेस्टमेंट करथिबो डिविडेंड पाउथिबो इन्वेस्टमेंट करथिबो डिविडेंड पाउथिबो किबा ग्रुप ऑफ कंपनीज अछंदी जार के कोन खाली इन्वेस्टमेंट मोटिव रे काम करचंदी तो दीज कंपनीज आल्सो से माने कोन बायबैक करि परिबे 2 पॉइंट्स क्लियर थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट होची जदी कंपनी किछि भूल करिछ को भूल माने से कंसीडर करची फर्स्ट थिंग होची डिपॉजिट जहां भी पब्लिक रो एक्सेप्ट करची सेडा रीपेमेंट करिनी इंटरेस्ट आ देनी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर से करिनी बुझिला रिडेम्पशन माने कोन प्रेफरेंस शेयर होल्डर मान को जो पैसा देवर अछि डिबेंचर होल्डर मान को जो पैसा देवर अछि से जिंसडा से करनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू एनी शेयर होल्डर को एले शेयर होल्डर को से पेमेंट ऑफ डिविडेंड ता फेल कर देछि देनी किंबा कार्ड भी टर्म लोन नेछि आउ ता टर्म लोन आउ इंटरेस्ट दीडा जाको पेमेंट करनी का से कहिछि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक बुझि पालो इज द एंटायर कांसेप्ट क्लियर और नॉट मते टिके कंफर्म करो यस थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बोर हो ना कौन नहीं कहियो कौन नहीं रे नहीं सतरे कहि परियो टिके टिके आ एडा कौन फिल्म स्टोरी ना कौन बोर होबुनु सत कथा कहया कथा त माने ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो फिर भी तांके चलिबो आमे खाली सुनछु त माने तो एक्टिंग भी करियो पड़ियो कि हां 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 रिक्वेस्ट थिला ना मोर एडा आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट ए जिंसडा को लाइक टिके इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग बनेया पई बट थिंग इज से जदी तारा निजर शेयर्स किनुची देखिलो तमे नहीं ये भी बोर ही होची पहले भाबो तमे कंप्यूटर रो केते ग्रेट बीइंग अ कंप्यूटर भी लॉग बोर हे होची आ सब्जेक्ट इंदी होची नहीं तो भाबो
देखो प्रोसीजर टा किंदी लिखिबो फर्स्ट थिंग होची इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज माने कोन स्टॉक एक्सचेंज को जणेबो हैला स्टॉक एक्सचेंज को जणेबो देन convene a board meeting convene a board meeting convene a board meeting convene a board meeting disclose the disclose the disclose the outcome disclose the outcome of board meetings to stock exchange disclose the outcome of board meeting to stock exchange disclose the outcome of board meeting to stock exchange then convene a general meeting convene a general meeting convene a general meeting file form MGT14 to ROC file form MGT14 to ROC file form MGT14 to ROC file तଳ तळକୁ ଏମିତି କରିପାରିବ ବକ୍ସ ରେ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ file resolution to SEBI and stock exchanges SEBI and stock exchanges file resolution to SEBI and stock exchanges file public announcement with board file public announcement with board file public announcement with board then last होची सॉरी लास्ट नहीं आउ टिके अछि एंटायर प्रोसीजर टा से मांगी 12 मार्क्स क्वेश्चन तो एंटायरली लिखिबा को पड़िबो लॉन्ग क्वेश्चन एडा डायरेक्टली फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आराम से पानी पियो लिखो फाइल पब्लिक अनाउंसमेंट विथ बोर्ड फाइल लेटर ऑफ ऑफर विथ फाइल लेटर ऑफ ऑफर with ROC or board से काउ जण को फाइल करले चलिबो कहूची ROC और बोर्ड हैंडराइटिंग आज टिके ज्यादा घटिया हो गया नो इश्यू appointment of merchant banker appointment of merchant banker for starting the process appointment of merchant banker for starting the process last point होची opening escrow account तो escrow account माने सेडा गोटे टाइप ऑफ अकाउंट जो थ्रू रे की खाली
ए ट्रांजैक्शन टा हे परिबो हैला खाली एस्क्रो अकाउंट रे से करि पारि आउ को माध्यम रे से करि परिबो। देखो से कौन प्रोसीजर कही फर्स्ट से कही कि इंटीमेट करिवो स्टॉक एक्सचेंज को नंबर 1 बोर्ड मीटिंग कन्वे करिवो नंबर 2 बोर्ड मीटिंग रा स्टार्ट करिवो नंबर 3 होची आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग माने बोर्ड मीटिंग रे कोन तमे डिसाइड करला सेडा तमे जानिबार अछि स्टॉक एक्सचेंज को नंबर 3 देन कोन करियो बोर्ड मीटिंग पर आसे हमरो जनरल मीटिंग बोर्ड मीटिंग पर आसे हमरो जनरल मीटिंग देन को फॉर्म फाइल करिवो MGT 14 कहा गो ROC MGT 14 फाइल करिवो MGT 14 इज द फॉर्म फॉर बायबैक सेडागा तमगु बिट क्वेश्चंस रे आसपर बिट क्वेश्चंस रे तीनटा जिंस आसी परियो गुटे होची फॉर्म टा लिखि परियो त माने चाहिले फॉर्म गुटे पचरिबो सेकंड थिंग होची का थ्रू रे बायबैक हे परिबो मर्चेंट बैंकर थ्रू रे आगा हे परियो आ के करि परियोनी मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करियो पड़िबो सेकंड थिंग एटा थर्ड थिंग होची को अकाउंट रे हे परियो escrow account रहेगा ही पर so these three questions can be asked in bit questions clear 6 point होची फाइल रेजोल्यूशन टू सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस को किछि रेजोल्यूशन फाइल करबा देन पब्लिक अनाउंसमेंट विथ बोर्ड को पब्लिकली अनाउंस करिया फर्स्ट तो से माने डिसाइड करले कि हमें करबा कहिगिरी तापर स्टॉक एक्सचेंज को परमिशन नेले सेडा बे कोन करचंदी पब्लिकली अनाउंस करचंदी देन कोन करिया लेटर ऑफ ऑफर कि हमें को ऑफर लेटर से मानन को दबा को प्राइस रे किनिबा कोन से सब जिंस जा कोन आरओसी किंबा बोर्ड को तांके फाइल करिके कहिबे देन अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर गोटे मर्चेंट बैंकर को से माने अपॉइंट करिवे को जिंस पई प्रोसीजर टा करिया पई एंड द लास्ट थिंग इज ओपनिंग ऑफ एस्क्रो अकाउंट क्लियर इज देयर एनी डाउट केले पचरी पारियो आजिरो क्लास रो मु कहूची कंपलसरीली गुटे क्वेश्चन तमे पाइबो एग्जाम रे डेफिनेटली पाइबो मु जेति की भी क्वेश्चंस डिस्कस करची अराउंड 12 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स 22 प्लस 4 के तेला 22 प्लस 4 होची हमरो 26 देन 30 देन गुटे लास्ट में बे केस ला गुटे डिस्कस करबी सेडा होची हमरो 3 मार्क्स क्वेश्चन तो अप्रोक्सीमेटली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 33 मार्क्स मो 30 मार्क्स एस्टिमेट पकोच एटलीस्ट यू विल गेट 15 मार्क्स क्वेश्चन एथिरो बिट क्वेश्चंस भी डिस्कस करछु अलोंग विथ दैट हमरो हे होची 35 मार्क्स तो कार जदी किछि डाउट अछि पचरी पारिबो दैट्स व्हाई मो बहुत स्लो जाउची बहुत एक्सट्रीमली स्लो जाउची तो पचरी पारियो खाली हैशटैग करिगी लिखि दियो तो तळेगा केस ला क्वेश्चन ला गुटे एडा रगा रिलेटेड केस ला क्वेश्चन ए पॉइंट रो the buyback of shares the buyback of shares the buyback of shares the buyback of shares is not prohibited the buyback of shares is not prohibited if the default if the default is remedied if the default is remedied and a period of 3 years has lapsed lapsed माने कोन कंप्लीट हे जेच ए प्रकार वर्ड्स अगर तुमको यूज करिया पड़ियो बिकॉज़ यू आर प्रोफेशनल्स has lapsed after such default
after such default cease to subsist, cease to subsist, cease to subsist. तो केस लो क्वेश्चन कौन एथरे ना आमे गुटे जिंस पढ़लु कि हमर तीनटा प्रकार प्रोहिबिशंस अछि टिके सुनो तीन प्रकार प्रोहिबिशंस अछि से तीनटा जिंस जदी होउची कहले आमे कोन बायबैक करि परिबानी बट जिंस कोन आली कहले बायबैक जहां भी अछि से जिंसला नॉट प्रोहिबिटेड माने अलाउ अछि केबे अलाउ अछि जानछो ना जदी एतिकी जिंस हेले मध्ये अलाउ अछि केबे अलाउ हे परिया जानछो जदी से बायबैक रे जहां भी डिफॉल्ट करिछि मो एग्जांपल भी कहबी तुमको डिफॉल्ट जहां भी करछि सेडा से ठीक कर देला फॉर एग्जांपल डिपॉजिट्स रीपेमेंट कर नथिला डिपॉजिट्स रीपेमेंट कर देथिला माने अगस्त 18 2020 रे कोन करथिला से रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स करि नथिला तो से कोन कर देला सेप्टेम्बर 20 2020 रे कोन करला से रीपेमेंट कर देला तो एडा हला परे 20 टू 21 21 टू 22 22 टू 23 माने सेप्टेम्बर 20 2023 रे से कोन करि परिया जानछ ना बायबैक करि परिबो बायबैक करि परिबो से एग्जांपल ता मध्ये तमे पाखरे लिखि परिबो चाहिले तो सीए कहूची डिफॉल्ट करले मध्ये आमे ताकू सेकंड चांस दोउछु केबे आमे देई पारु जानछ ना फर्स्ट थिंग हो से डिफॉल्ट ठीक करियर अछि डिफॉल्ट ठीक करियर अछि एंड मो चाहूची कि 3 वर्ष पास हेबा दरकार 3 वर्ष सरीबा दरकार कोन पे से 3 वर्ष टाइम पीरियड देला कहले जदि गोटे लोक रीपेमेंट करूनी डिपॉजिट को तो ता पाखरे पैसा नहीं कहले चले तो से कंपनी है कौन करची कंपनी से कंपनी को परमिशन दोची किंबा टाइम दोची कि तू ग्रो करे वी आर गिविंग यू 3 इयर्स 3 इयर्स पर तू जहां भी करि परियो बायबैक करि परियो कि जहां ले करि परियो बुझला पॉइंटटा क्लियर 3 मार्क्स एमटीपी रे केस ल अछि तो चांस अछि आसी परिबो एग्जाम रे कार किछि डाउट अछि प्लीज पचरो देखि परियो त एनालाइज किछि डाउट अछि ले कहले ओके फाइन थैंक यू आ कार किछि डाउट अछि तम दि जण को नहीं ठीक अछि बायबैक को ये रा अछि एथरे अच्छा गुट्टे टॉपिक रहिला बायबैक रो लास्ट टॉपिक फॉर टुडे सोर्सेस ऑफ बायबैक सेडा भी क्वेश्चन थिला हमरो सोर्सेस ऑफ बायबैक कोन वॉइस क्लियर नहीं प्लीज कंफर्म ऑडियो क्लियर अछि ना नहीं प्लीज कंफर्म ओके फाइन थैंक यू बड़ा असुविधा बड़ा टेंशन कहीं गले बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक चलची तो जानी पारथिबा आज खाली बायबैक आगे हेची बट मु केते सीरियसली टिके स्लोली जाउची तो मु टेंशन रे अछि एक्चुअली कया गला आई एम इन एंजाइटी तो लास्ट लेखो सोर्सेस ऑफ बायबैक सोर्सेस ऑफ बायबैक एटा स्कैनर क्वेश्चन को अटेम्प्ट रो मते मन नै बट एटा स्कैनर क्वेश्चन सोर्सेस ऑफ बायबैक source of buyback रे first lekha a company can buy back its own shares a company can buy back its own shares
its own shares from the following sources, from the following sources, from the following sources. Number 1 होची free reserves, security premium account, securities premium account, proceeds माने कौन, revenue जहाँ भी हमें income पाइलु, proceeds from issue of shares or other specified securities or other specified securities. एडा होचे अपने तीनटा सोर्सेस हैला एडा मन रखिबा पड़ियो कीवर्ड्स एडा को काहे गेली कहले तमे कहयार अछि ना जदी के कंसल्टेंसी पे तुम पाखो आसिला एबे भाबिया कि तुम माने सीएमए हे जेइचो गोटे फर्म डिखुलचो गोटे कंपनी तुम आसी अप्रोच करछि कि सो डियर सर एंड मैडम सर और मैडम आमे बायबैक करिया चाहूछु हैला तमे को जिंस रे करि परियो तो तमे कोन तिथि देखि कहया सोमवार करो गुरुवार करो हिंदी कहया नाही तमर फ्री रिजर्व्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट प्रोसीड्स भितर करि परिबो तो जदी गुटे प्रोफेशनल तो से केन आंसर करियो परसा केन आंसर करियो जदी के आसी पचार जे तमो फर्स्ट कोन करियो बेसिक भाबो जदी के पचार जे बायबैक करि परियो ना तो तमे कोन करियो फर्स्ट रे जाबे को यस करि परिबो बट तमरो गुटे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स अछि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स कोन कहितली पांचटा तमरो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टा टिके देलो कहि कि तमे देखिबो देन कोन अछि आमे कोन करथि 25% रु कम रहिबार अछि हमरो एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स ये कोडे पड़ला हां से भितर कम रहिबार अछि देन कोन थियर अछि फुल्ली पेड अप हेथियर अछि वेरी गुड देन हाँ ओनली कैश रहेगा तमे किनि पारिबो सेडा हैला पर तमे कोन करियो को मेथड्स रे किनि पारियो तमे कहि दबो कि को मेथड्स रे किनि पारियो तमर जदी गोटे चिन्हा परिचय के शेयर होल्डर माने अछंदी तो डायरेक्टली तमे सेथरु किनि पारिबो किंबा ओपन मार्केट रो तमे किनि पारिबो स्टॉक एक्सचेंज रो किंबा एम्प्लॉय माने जे भी अछि तांका नंग में पचरे पारिया कि केतुरा राइट इश्यू अछि कि तम पाखरे तमे एते दिन काम करलनी तो को जिंस हेई पारिबो कि रुद्र टिके चार्ज हैला तापरे कोन करियो केबे केबे तमे करि पारिबोनी तो तमे कोन करियो ना एतिकी जिंस तमे करि पारियोनी फर्स्ट सब्सिडरी रो किनि पारियोनी किंबा तमे निजे सब्सिडरी मध्ये किनि पारिबोनी आ गोटे कोन इन्वेस्टमेंट कंपनी रो किनि पारिबोनी किंबा थैंक यू ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी रो मध्ये हम किनि पारिबानी आ कोन को भूल हेथिले किनि पारियानी डिपॉजिट रीपेमेंट न करि पारले इंटरेस्ट रीपेमेंट न करि पारले डिबेंचर रिडेम्पशन न करि पारले डिविडेंड रीपेमेंट न करि पारले किंबा टर्म लोन और इंटरेस्ट रीपेमेंट न करि पारले तो एतिकी करले मध्य कंपनी एक्ट तुमको फॉरगिव करिवो भूली जिवो हैला केबे केबे करियो को जाहाले को आंसर टाइडी अछि को स्पीक आउट ना फॉरगिव करियन रे इन रहले भल लगी टिके भूलियर अछि ना टिके माफ कर दो पिल्लाडा भूल करची फाइन हां केबे 3 इयर्स लैप्स हबो डिफॉल्ट तमे करेक्ट करला परे भूल करला परे नै डिफॉल्ट ठीक करला परे 3 इयर्स मस्ट हैव लैप्स्ड फ्रॉम द डिफॉल्ट से कोन लेखि छि वर्ड देखिलो ना रेमेडीड माने कोन गोटे रेमेडी अछि वी हैव अप्लाइड इट आ सेटा हम ठीक करछु रेमेडीड इज द की वर्ड हियर काई एडा मते के पचर ना तो सब मुआ कही मुआ बुझी मुझे ही समझना पड़ेगा आप लोग नहीं समझोगे मुझे ठीक है चलेगा एडा होची कोन हमर एंटायर प्रोसीजर
तो आई होप कार किसी डाउट नहीं, जदि किसी डाउट अच्छी पचारि पारिबो। फाइन, थैंक यू, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। किसी भी टेंशन नबनी, काम रे हैंडल करिवो। एमसीक्यू क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट मटेरियल बिल्कुल भी प्रैक्टिस करिवोनी बिकॉज़ किसी भी क्वेश्चंस एथरो आसुनी हैला। कंसेप्चुअल क्लैरिटी विल ओनली हेल्प यू। स्कैनर रे जहां भी पछरे क्वेश्चंस अच्छी सेडा करो, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस करो, बट इंस्टीट्यूट मटेरियल जहां भी एमसीक्यू उडा प्रिस्क्राइब करची दोज आर वेरी सिंपल, जोडे कि से मोस्टली पचारुनी हैला, ठीक ठाक कहि दोछ। तो सेते पे होची एडा, एंड जहां भी डाउट अछि तमे पचारि पारियो। थैंक यू सो मच।